Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform, Unacademy. Let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Sir, and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and English Services examination. Right, I have qualified some written examination like State English Services examination Uttar Pradesh and uh, some other Maharashtra PSUs also like NTPC, SAIL, BHL, Coal India Limited, and other PSUs like DVC and Nuclear Power Corporation. First of all, you all need to download Unacademy Learning app. First of all, you all need to download Unacademy Learning app. And after downloading this app, you will get daily live and getting your subscription, of course. You will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses, okay, and unlimited. Now, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल कराएंगे. Okay, you can watch live session as well as recording. अपने टाइम और कंफर्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं. लेकिन लाइव क्लासेस देखने का बेनिफिट क्या है? That you can chat with your educator, right? You can ask your doubts in the class itself. That online class, that live class will be fully interactive, where you can interact with your educator. जो भी सब्जेक्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो. ये आपके पास रिकॉर्डेड सेशन में ये फैसिलिटी नहीं होगी, ये आप कर सकते हो वहाँ पे. इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट क्विजेज मिलते हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट? मॉक टेस्ट, क्विजेज, ऑल दीज थिंग्स. नाउ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे, चाहे वो गेट के लिए आप कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हो, और ये जो कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी पे आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट. Now you will get chance to learn with the top educators, other top educators across India. जो कोर्सेज रन कर रहे हैं अनअकैडमी पे थ्रू आउट द ईयर फॉर different branches like mechanical, electrical, civil, CSIT, instrumentation, इनके लिए different number of courses रन करते हैं थ्रू आउट द. Like there are 24 courses running for mechanical engineering. ओके, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं. अगर एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप इनमें से कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, आप मैक्स ऑफ बेनिफिट plus. Now there are two kinds of subscription that are available with Unacademy. One is the plus subscription, other is the icon. क्या डिफरेंस है दोनों में? लेट मी टेल यू इन द ब्रीफ दैट अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो जो आपको मिलता है दैट यू विल गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, interactive live classes, structured course and PDFs, live test and quizzes. Okay? All those things you will get in Iconic as well. जो भी कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, जो भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल कराया जाता है. उसका जो नोट्स होता है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा. लाइक यू कैन गेट दैट नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट. लेकिन जो बेस्ट फीचर है आइकॉनिक का, दैट यू विल गेट अ पर्सनल कोच. दैट मीन्स यू कैन हैव one-to-one discussion with your personal coach regarding your doubts, regarding the strategy की पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे उसको अटैक करना है. ओके, क्या पैटर्न होता है उस एग्जामिनेशन का, और उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल दोज थिंग्स यू कैन डिस्कस. ओके, एक पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है. You will also get personalized test answers. आपने टेस्ट के किस पार्ट में बेटर किया है, किस पार्ट में आप और बेटर कर सकते थे. All those things you can discuss with your personal coach. Now you will also get a study planner, preparatory study material also. You will get a preparatory study material. Okay, all those things you will get in Iconic subscription. Now the fee for the plus subscription, of course, for 24 months, the fee is 44,000 rupees only, right? अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है 1, 3, 6, 12 एंड 18. कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट फॉर 24 मंथ द फी इज 44,000 rupees only. If you use this code RAVIPY, you will get 10% discount. You will get 10% discount, and ultimately you have to pay 39,600 only for 24 months. Okay, for 24 months, this is the amount that you have to pay. और भी आप ये रेफरल कोड यूज करने के बाद, अगर आप ये रेफरल कोड यूज कर रहे हैं, if you are using this referral code,
Okay? ये रेफरल कोड किसी भी कोर्स के लिए वैलिड है, जो भी आप 1, 3, 6 और 12, 18 मंथ्स किसी भी कोर्स को लेते हैं तो ये रेफरल कोड आपका वैलिड है. नाउ you will get subscription. Iconic subscription जो आपकी fee है, दो courses available हैं, 12 months and 24 months. For 12 months, the fee is 50,250. 50,250. For 24 months, the fee is 74,000 rupees. 74,000 rupees. Okay, for 12 months, 24 months, कोई भी कोर्स लेंगे आप, अगर आपने ये रेफरल कोड यूज किया, यूजिंग दिस रेफरल कोड Ravi PY, you will get 10% discount and you have to pay 45 and 66,600 only, right? After getting 10%. So I hope you got the point कि आपको जो भी है कौन सा कोर्स लेना है, जो भी आपको सूटेबल लगता है, प्लस या आइकॉनिक में से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट availing the benefits as soon as. Okay, so I hope you got the point. So let's start with today's session. We are discussing in this series thermodynamics, revision through the problems. Right? Revision through problems we are discussing here. Revision through problems. We have already discussed a few points like basic concept, work transfer, heat transfer, and steady flow energy equations also. All these things we have already discussed. रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम्स करने का मतलब हमारा जो पर्पस है इस लेक्चर का, राइट, जो हमारा टारगेट है या फिर पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज टू रिवाइज द concept, right, concept, formula, right. This is for gate 2021. You can revise the concept, you can revise the formula, you can also uh, concept revise the formula, and फॉर्मूले की जो रिवाइज करने का जो तरीका है, दैट इज यू विल स्टडी द assumptions behind this, assumptions behind it, and validity of the formula as well. Validity of the assumptions and validity as well. You will get assumptions, you will discuss the validity, all those things we will discuss in. Right? All those things we will discuss in. Concept, formula, assumptions, validity. Okay, then we will solve some practice problem. Practice, right? बिना प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के रिवाइज करना किसी भी टॉपिक को, दैट कैन बी ट्रिकी, दैट कैन बी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट, इन द फ्यूचर. वाई? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट गेट के टाइम पे, एग्जामिनेशन के टाइम से पहले आपने 2 मंथ्स 3 मंथ्स बैक ये सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा, राइट. अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट या फॉर्मूला पढ़ लिया, नोट्स रिवाइज कर लिए, राइट, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, टू रिफ्रेश, इसका हमारा मकसद ये है to refresh the problem solving approach. प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उसको रिफ्रेश करना, उसको रिफ्रेश कर लेंगे आप, ताकि एक फ्लो बन जाएगा, ताकि एक फ्लो बन जाए आपका उस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल जब आप एग्जामिनेशन में अपने बैठेंगे. सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना, कंसेप्ट पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स होती है, छोटी छोटी बातें होती है जो आपको फॉर्मूला पढ़ते टाइम वो आपके माइंड में क्लिक नहीं करेंगे और रिफ्रेश नहीं, तब तक जब तक कि आप उसको अप्लाई करते हैं. तो हमारा जो टारगेट है दैट इज 10 to 15 प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 to 15 प्रॉब्लम्स पर टॉपिक. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, 10 to 15 प्रॉब्लम्स per topic we are solving here, right, to refresh the problem solving. Okay, so I hope you got the point of this series, why we are discussing revision through problems. Okay, so let's start today's session. Today we are going to discuss second law of thermodynamics, right, for one of the most important law of physics. Second law of thermodynamics. We are revising here. Second law of thermodynamics. Okay, this is one of the most important law. Second law of thermodynamics. Okay, कुछ basic definitions थी, like what is source, what is source, source that is supplies energy
सप्लाइज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी यहाँ पे है, बाकी और भी एनर्जी हो सकती है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिकल साइंस। पूरी फिजिक्स में इसका कहीं पे कोई वायलेशन, राइट, इन द होल फिजिक्स देयर इज नो वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लॉ ऑफ नेचर। ओके, तो सोर्स का जो हमारा सेंस है थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज सप्लाइज थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, विदाउट undergoing without undergoing any temperature change, right? But a sink absorbs thermal energy without undergoing any temperature. Absorb thermal energy without undergoing any temperature. Okay. Now, high grade energy, low grade energy. High grade energy means जो आपका high grade energy that is organized form of organized form of energy, right? Organized form of energy, that means that is work is called organized form of energy, that is high grade energy. What is low grade energy? Like disorganized form of energy. Disorganized form of energy. Disorganized form of energy, that is heat. ओके, क्यों बताया मैंने आपका ये लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी हमने क्यों डिस्कस किया है यहाँ पे, दैट वी कैन सी। कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ जनरल मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? राइट, जनरल मीनिंग ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट low grade energy into high grade energy, right? It is impossible to convert low grade energy into high grade energy completely, in a completely in a completely in a cycle. It is impossible to convert low grade energy into high grade energy completely in a cycle. Okay, so this is the general meaning of second law of thermodynamics, right? हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में आप नहीं कर सकते, दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? स्टेटमेंट्स के अलावा, इसके अलावा जो दो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं उसके अलावा दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? इट इज, बार बार हम साइकिल की बात करेंगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, विल डिस्कस अबाउट द इनर साइकिल। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी, दैट इज हीट, that is heat, into high grade energy, that is work, high energy completely in a cycle. So this is the general statement of second law, that this is the general statement of second law. Okay, now let's start with the statements. Then brief introduction देख लेते हैं statements का। Statements, first is Kelvin Planck statement. Kelvin Planck, what is the Kelvin Planck statement? Right. Kelvin Planck statement क्या है? It is impossible to develop a device, simple statement देख लेते, it is impossible to develop a device
device uh, operating on a cycle. Device operating on a cycle. Operating on a cycle which produces work, which produces work, right, continuously, which produces work continuously by exchanging heat with a single reservoir, single reservoir, with a single reservoir, राइट। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई डिवाइस आप नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ सोर्स हो, यहां से आप एनर्जी ले रहे हैं और ये कोई डिवाइस है and this device is producing work, but this device is not rejecting anything else. Now this is called PMM, perpetual motion machine of, and this is impossible. Okay, this kind of machine is impossible. This is the Kelvin Planck statement और इसके बेस्ड हम पढ़ते हैं that is our heat engine. Now what is our heat engine? तो इसके बेस्ड हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं that is heat engine. जो मेन क्वेश्चंस आते हैं heat engine, that this is T1 source, this is a heat engine, this is taking heat from here and rejecting some amount of heat and producing work. This is T1 is always there then. This is source, this is sink. इसको आप हीट सप्लाइड भी कहते हैं, इसको हीट ऑफ रिजेक्टेड भी कहते हैं, हीट सप्लाइड एंड हीट. Okay, this is our source, this is sink. What is W? What is work? Is Q1 minus Q2. What is efficiency? Work done. Output by input. What is input? By work. Right? या फिर what is work? Q1 minus Q2. That will be Q1. Sorry, 1 minus Q2. Now this formula is valid for both reversible as well as irreversible. As well as irreversible. irreversible. यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन आपसे नहीं कहेगी ये इंजन रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकता है, राइट. वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल इंजन. रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल. ओके, दिस इज आवर हीट इंजन. हीट इंजन काम ये है कि हाई टेम्परेचर सोर्स से आपका हीट लेना और उसके कुछ वर्क में कन्वर्ट करना. रीजन ऑफ हीट इंजन. नाउ व्हाट इज Clausius system? Second one is Clausius. Clausius statement. It is impossible. What is Clausius statement? It is impossible to transfer heat. It is impossible to transfer heat from lower temperature to a higher temperature. From lower temperature to a higher temperature without external heat. Without external heat. Right? Without external, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, एक्सटर्नल एड के आप लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते. एट दैट विल इवैल्यूएशन ऑफ Clausius statement. That is second statement of thermodynamics. Second of thermodynamics. There are two statements. One is the Kelvin Planck, other is the Clausius statement. Right? आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अगर आपको हीट ट्रांसफर करना है, you will have to use a
हीट इंजन, राइट, यू विल हैव टू यूज अ एक्सटर्नल एड, कोई मशीन लगानी पड़ेगी, सो आपको ये खुद से नहीं होगा, आपको एक मशीन वहां पे यूज करना, राइट। इस सबका डिटेल डिस्कशन किया था, मैंने समझाया था दोनों का मतलब क्या है, क्लॉसेस का भी, कैल्विन क्लाइन का भी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q2 जो हीट रिजेक्टेड है, दैट कैन नॉट बी जीरो, राइट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो हीट रिजेक्शन है वो कभी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, राइट। दैट मीन्स जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर इक्वल टू वन, अगर ये जीरो होता, दैट इज जीरो, एफिशिएंसी इज वन, तो इसी हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती, नो मैटर how idealized this engine is, no matter how idealized this engine is, आप इंजन कितना भी आइडियलाइज कर ले, कितना भी इसको आइडियल इंजन बना ले, लेकिन लेकिन आपका जो एफिशिएंसी है उस हीट इंजन की वो 100% कभी भी, ऐसे और से भी मशीन होती है जिनकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि उसका रीजन कुछ और है, फ्रिक्शन लॉसेस, अदर लॉसेस, राइट। लेकिन अगर आप वो लॉसेस नेग्लेक्ट कर दें, सारे लॉसेस नेग्लेक्ट कर दें, तो आप कह सकते हैं कि दैट ये मशीन के अगर सारे लॉस हमने नेग्लेक्ट कर दिए तो ये मशीन 100% है, ठीक। लेकिन एक हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी कितना भी आइडियल सिस्टम आप बना ले, 100% कभी नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि आपका जो हीट रिजेक्शन है क्यू आर, Q2 या फिर क्यू आर, ये जो हीट रिजेक्शन है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, यू विल हैव टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ, विल हैव टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट, ओके। आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे, सम इंटरव्यूज क्वेश्चन, सम इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक? वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और डिटेल में, कि पावर प्लांट की एफिशिएंसी हमेशा 20-30% क्यों होती है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट लेट अस डिस्कस दिस नाउ। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर काम क्या है? टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर का काम ये है टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, मेंटेन लोअर टेम्परेचर, to maintain lower temperature, to maintain lower temperature, right? अब सपोज कोई रेफ्रिजरेटर है, दिस इज T1, okay, this is a refrigerator R, and this is another, दो रिजर्वायर्स है T1 एंड T2 पे। T1 जो हमारा नोटेशन होगा, T1 विल ऑलवेज बी देन T2, दिस हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर, इसको हम TH भी लिख सकते हैं, हायर टेम्परेचर, एंड TL लोअर टेम्परेचर, okay. Now, what is the purpose of refrigerator? To remove heat Q2, right? और इसको जो हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर स्टोरेज रूम से जो लोअर टेम्परेचर है, दिस इज स्टोरेज, राइट, एंड दिस इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर फिर सराउंडिंग कह सकते हैं। लोअर टेम्परेचर जो आपका सराउंड स्टोरेज है, जो पहले से कम टेम्परेचर पे है, वहां से हीट लेना और इसको सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देना, ये काम है रेफ्रिजरेटर का, ओके। क्यों करता है ये, क्यों हमें अमाउंट लगातार इस स्टोरेज से क्यों निकालना है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की है, वी आर नॉट गोइंग टू गोइंग इन डिटेल, वो आप समझ सकते हैं कि ये Q2 हमें यहाँ से क्यों निकालना पड़ रहा है, इस टेम्परेचर T2 को मेंटेन करने के लिए ये Q2 हमें क्यों निकालना पड़ रहा है, दैट इज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हियर आल्सो वी कैन राइट माइनस W प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1, जो दोनों आपका W अपने वर्क दिया है, राइट, एक्सटर्नल एड यहाँ पे देना पड़ेगा, उस एक्सटर्नल एड का इन साइकिल यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा आपको, हम कंटिन्यूस बात करते हैं, जब भी बात करते हैं सेकेंड ऑफ एनालिसिस की, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की बात। तो ये हो गया। दूसरा COP ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज Q2 बाय वर्क इनपुट, दिस इज आवर वर्क, दिस इज आवर Q2 by work input, Q2 by W, COP R, Q2 by work,
Q2 by work input. Okay. Now you can also write this as Q2 by Q1 minus, this is our QP of रेफ्रिजरेटर. इसी तरह से अगर आपने हीट पंप ले लिया, सेम थिंग है. फॉर हीट पंप अगर इसके साथ आपका हीट पंप होता, रेफ्रिजरेटर की जगह आपने हीट पंप यूज किया होता, तो सब कुछ सेम होता, सब कुछ यहाँ पे सेम होता, यही सेम फिगर बनता है. मैं तो फिर से ड्रॉ कर लेता. दिस इज T1, दिस इज अ हीट पंप. नाउ दिस इज Q2 आपने यहाँ से लिया, दिस इज लोअर टेम्परेचर, दिस इज T2. T1 इज हियर आल्सो ग्रेटर देन Q1 एंड Q2. यहाँ पे भी आपको वर्क देना पड़ेगा. एवरीथिंग एज इज सेम. जो हीट पंप की जो COP होगी, दैट विल बी Q1 बाय, क्योंकि यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो ये हीट पंप का काम ये है कि जो हायर टेम्परेचर, जहाँ पे पहले से टेम्परेचर ज्यादा है, राइट, लो टेम्परेचर से आपने हीट लिया और हायर टेम्परेचर को उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तो सिर्फ डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ जाता है. पर डिजायर्ड इफेक्ट इज डिवाइड बाय वर्क. तो आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 बाई Q1 माइनस. अब ये जो फॉर्मूला है दोनों, ये जो दोनों फार्मूले मैं कंबाइंड लिख देता हूँ. ये दोनों जो फार्मूले हैं, these formulas are valid for these formulas are valid for both reversible and irreversible refrigerator or heat refrigerator और heat. ये जो फॉर्मूला है जो हमने लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है हमने, ये फॉर्मूला रेफ्रिजरेटर के लिए और ये फॉर्मूला हीट पंप के लिए. ये दोनों ही फॉर्मूले आपका वैलिड है, ये दोनों ही फॉर्मूले आपके वैलिड हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का. दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल इंजन. रीजन इज कि हमने अभी कोई कंडीशन नहीं दी, राइट. सिंपली हमने सिर्फ COP या डिजायर्ड इफेक्ट बाय, व्हाट इज COP? डिजायर्ड इफेक्ट बाय इनपुट, राइट. COP हमने सिंपल डिस्कस किया था. व्हाट इज COP? दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क. इस हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में ये अंतर है कि रेफ्रिजरेटर में ये जो Q2 आप निकाल रहे हैं, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, और इसमें हीट पंप में जो Q1 आप हाई टेम्परेचर सोर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर डिजायर, दैट इज आवर डिजायर. तो दोनों केस में आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो चेंज हो गया वर्क में. इसके अलावा एक टर्म होता है यहाँ पे, अभी तक हमने कोई कंडीशन यूज नहीं की है, राइट. दैट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल. We also call it as Kelvin scale. And since Kelvin proposed it, we call it Kelvin scale. Now, what is Kelvin scale? ये है T1 टेम्परेचर, दिस इज T2. ये है कोई हीट इंजन. From here you are taking Q1, from here you are reacting Q2, and you are producing work, and you are producing work W. Okay, and you are producing work W. Okay, अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है, फॉर रिवर्सिबल साइकिल या फिर इंजन, right, this Q1 by T1 is equals to Q2 by, right, या फिर इसको लिख सकते हैं आप Q1 by Q2 equals to T1 by, right. कंडीशन सिर्फ ये है, कंडीशन सिर्फ ये है, कंडीशन सिर्फ ये है that T1 T2 are in Kelvin, should be in Kelvin, right.
आप इसको डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, तो आपका जो रेशियो है Q1/Q2 का, दैट विल बी इक्वल टू T1/T। T1 जहाँ से सोर्स आपने हिट लिया है Q1 अमाउंट, Q2 जहाँ पे जिस रिजर्वायर को आपने ही रिजेक्ट किया, Q1/Q2। तो इसको अप्लाई करते टाइम सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। एक, जो T1 T2 है वो, राइट, वो आपका केल्विन स्केल में होना चाहिए, केल्विन स्केल। और जो इंजन है, राइट, जो इंजन है, दैट शुड वर्क, दैट should that should be working with two reservoirs, with two reservoirs, two reservoirs। अगर ऐसा कोई केस है कि एक आपका इंजन है, यहाँ से वर्क कर रहा है, यहाँ पे, और एट T1 T2 T3 Q1 Q2 Q3 ऐसा है, इसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इस केस के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इस फॉर्मूले को वैलिड होने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि ये जो आपने स्केल लिखी है, जो भी आपने स्केल लिखी है, वो सिर्फ दो रिजर्वायर के बीच में एक्ट करना चाहिए। और T1 T2 को आप हमेशा केल्विन में रखिए, डिग्री सेल्सियस में कभी आप नहीं रख सकते, राइट, दैट इज नॉट वैलिड। नाउ अब हम कंडीशन ऐड कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने फॉर्मूले देखे थे, अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे, या फिर हीट इंजन का यहाँ पे, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके सिर्फ और सिर्फ किसी भी साइकिल के, रिवर्सिबल एज वेल इरिवर्सिबल, और वो हमेशा के लिए वैलिड था। अब हम लिख लेते हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल या फिर इंजन, जो आपका हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो कितनी थी, वो हो जाएगी 1 - T2/T1। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा T2/T1 माइनस T2। और जो रेफ्रिजरेटर की सॉरी हीट पंप की जो सीओपी हो जाएगी, दैट विल बी T1/T1 माइनस। और एक चीज आपको यहाँ से और मिल जाएगा, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप विल बी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस, ये आप जो फॉर्मूला लिखा है उसको आपने, लेकिन ये जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं टेम्परेचर के टर्म में, तो दैट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल ओनली। दीज फॉर्मूला जो आपने बाकी फॉर्मूले लिखे हैं हीट के टर्म में, ये आपका रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल साइकिल दोनों के लिए वैलिड, रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी और इरिवर्सिबल साइकिल, राइट, वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल इंजन, राइट। बट दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल ओनली। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो भी रिवर्सिबल होना चाहिए, जो हीट पंप है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, जो हीट इंजन है दैट शुड बी रिवर्सिबल। ओके, अगर ये सारी चीजें रिवर्सिबल हैं, अगर ये सब कुछ रिवर्सिबल है, तभी आप ये फॉर्मूला कर सकते। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिंपली जो Q2/Q1 था, 1 - Q2/Q1, इस फॉर्मूले में 1 - Q2/Q1, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड, रिवर्सिबल के लिए भी, इरिवर्सिबल के लिए। लेकिन टेम्परेचर के टर्म में सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब आपका फॉर्मूला, जब आपका इंजन को, हीट इंजन को रिवर्सिबल, Q1/Q2 T1/T2, Q2/T1 हमने T1/T2 लिख दिया, T2/T1 लिख दिया। रेफ्रिजरेटर Q2/T1 - Q2, सिंपली T2/T1 - T2, सिंपल। ऐसे आपने हीट पंप का लिख लिया, ये फॉर्मूला आपने। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इतने सारे फॉर्मूले थे जो हमने देख लिए थे। ओके, आई होप कि आपका रिवीजन इसमें हो चुका है। थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स अगर प्रॉब्लम्स में आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तो वी विल रिवाइज दैट ऑल्सो। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम ये दो चीजें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसको सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब आपका जो इंजन है वो दो रिजर्वायर्स के बीच में एक्ट कर, और जो टेम्परेचर्स हैं T1 एंड T2, दैट शुड बी इन केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस में नहीं रह सकते, राइट, केल्विन स्केल, दैट मीन्स degrees Kelvin. That means in degrees. Okay. So I hope you got all these. Let's start some problems and we'll see.
First problem you have. First problem. Try to solve this question. Okay. You have 2 minutes to solve this question. Read and solve this question. A domestic food refrigerator maintains a temperature of minus 15 degrees Celsius, right? The ambient temperature is 30 degrees Celsius. If the heat leaks into the freezer at continuous rate of 1.5 kilojoule per second, okay, the least power necessary to pump this heat out continuously will be clear. दो तीन चीजें हैं इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान देना है. एक तो ये है कि इस हीट लीक का क्या मतलब है, और दूसरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट पावर. दो चीज आपको ध्यान देना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट हीट लीक्स एंड लीस्ट पावर नेसेसरी. लीस्ट पावर. अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान से देख लिया तो यू कैन सॉल्व दिस इजी. एक स्टोरेज है, हियर एक स्टोरेज है. दिस इज आवर स्टोरेज, राइट. ये एक स्टोरेज है, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज, इसको जो हमें मेंटेन करना है दैट इज माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, राइट. लेकिन होगा क्या कि जो बाहर से एनर्जी लगातार आ रही है इसमें, राइट, दैट इज 1.75 किलो जूल पर सेकेंड. तो बाहर से लगातार 1.5 किलो जूल पर सेकेंड एनर्जी इसमें आ रही है. तो अगर इतनी हीट पर सेकेंड इसमें स्टोरेज में जा रही है तो जो आपकी एनर्जी होगी, जो आपकी एनर्जी होगी, सर जो इसका टेम्परेचर होगा स्टोरेज का वो इंक्रीज कर. तो आपको जो इतनी एनर्जी इसमें आ रही है उसी एनर्जी को आपको यहाँ से निकालना है. और कितना निकालना है? दिस इज Q2 एंड दैट इज 1.75, राइट. किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलो. रेफ्रिजरेटर है, दिस इज, इसमें कुछ वर्क इनपुट होगा, देयर विल बी वर्क इनपुट एंड आप इसको सराउंडिंग को, जो आपका सराउंडिंग है उस सराउंडिंग को आप इसको रिजेक्ट करेंगे दैट इज T1. and this temperature, lower temperature is always T1 or sorry T2, higher temperature is always T1 for, and this is, और क्या कहा गया आपसे, दोनों का टेम्परेचर गिवन है दैट इज -15, दैट मीन्स 273 minus 15, 273 minus 15, that is 258, right, that is 258 Kelvin. 258 Kelvin. T1 is 30 degrees Celsius, that means 303 Kelvin.
मैंने बताया था आपको हमेशा केल्विन स्केल में रखना है टेम्परेचर को। ओके, दिस इज अब आपसे कहा गया कि लीस्ट पावर कब मिलेगी, लीस्ट पावर तब मिले, तब चाहिए होगी आपको जब इस इंजन की एफिशिएंसी, इस सॉरी इस रेफ्रिजरेटर जो मशीन है इसका सीओपी मैक्सिमम हो, राइट। सीओपी इसका मैक्सिमम होगा, परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगा। और परफॉर्मेंस मैक्सिमम तब होता है जब साइकिल या इंजन आपका रिवर्सिबल, राइट। लीस्ट पावर कह के आपसे ये कह दिया गया है कि दैट दिस डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज रिवर्सिबल, राइट। क्यों? क्योंकि लीस्ट पावर की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आपकी सीओपी मैक्सिमम होगी। और सीओपी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका इंजन या फिर जो रेफ्रिजरेटर है दैट इज रिवर्सिबल। अगर वो रिवर्सिबल है तो आपका इंजन, सॉरी जो एनर्जी आएगी, सॉरी जो पावर रिक्वायरमेंट होगी वो लीस्ट, तब तो आपका काम आसान हो गया। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर and that is desired effect by W, and that is equal to T2 by T1 minus, एक हमने ये भी फॉर्मूला देखा था, T लोअर बाय T हायर माइनस T लोअर। पावर रिक्वायरमेंट यानी कि वर्क रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे चाहिए, वर्क रिक्वायरमेंट। अब चूंकि ये किलो वाट में है तो डायरेक्टली किलो वाट में ही आएगा, एंड दैट विल बी Q2 T1 minus T2, what is Q2, 1.75 kilowatt, what is T1 minus T2, 303 minus 258 divided by 250, divided by 258. Solve 3 minus 0.305, and here work will come as 0.305 kilowatt, right। किलोवाट है वर्क इनपुट, या फिर यही है आपका पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड। ये पावर रिक्वायर्ड लिस्ट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और टेम्परेचर का फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, दैट इज फॉर रिवर्सिबल ओनली, राइट। इसका हमने साइकिल रिवर्सिबल कह लिया, इसका मतलब कि इसका जो सीओपी होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ओके, द आंसर इज 0.3 किलो, आंसर इज C, 0.3 किलो, आंसर इज 3 पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, again you have 2 minutes to read and try to read and solve this question. I'll give you 2 minutes. A cyclic heat engine operates between source temperature 800 degrees Celsius and sink temperature of 30 degrees Celsius. The least rate of heat rejection, again here the word mentioned is least rate of heat rejection. The heat rejection least है, that means जो work output है that is maximum. Okay, in that case the cycle you have to take is reversible. Right, the cycle, the engine you have to consider as reversible. Now let us see the solution. A heat engine 800 degrees Celsius, T1 is 10
273 Kelvin. 273 ऐड कर दिया आपने सिंपल 800 में. This is our heat engine and this is T2 sink, and sink is at 30 degrees Celsius, that is 303 Kelvin. 303 Kelvin. Now heat Q1 and Q2. This is Q1, this is Q2, Q1 and Q2, and this is the work per kilowatt आउटपुट आपको गिवन है हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट. जो वर्क आउटपुट है दैट इज 1, ये आपको लेना है. Now what is efficiency of this heat engine? Efficiency of this heat engine is work output by heat, that is 1 by 1. अब ये लीस्ट इवन है, आपसे कहा गया लीस्ट हीट रिजेक्शन, लीस्ट हीट रिजेक्शन, that means maximum work, that means maximum efficiency, and that means reversible engine, that means reversible. अगर ये इंजन रिवर्सिबल है दैट मीन्स रिवर्सिबल. अब अगर ये इंजन रिवर्सिबल है तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं 1 माइनस T2 बाई 1 बाई Q1, 1 by Q1 equals to 1 minus, what is T2? 303. What is T1? 107. 107. Right. That is 1073 minus 303. That is 770 divided by 107. 1 by 1 by. From here you will get Q1. The Q1 is 1073 by 770. 1.393, and this is 1.393. लेकिन आपको हीट रिजेक्शन चाहिए, दैट इज Q2. W is Q1 minus Q2. From here Q2 will be Q1 W, that is 1.393 minus 1.0.39. 0.393. What is the answer? क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है, ये देखना है कि उसमें क्या कहा गया है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. लीस्ट हीट रिजेक्शन है, दैट मींस कि वर्क शुड बी मैक्सिमम. जो आपने हीट सप्लाई किया है उसमें से जो रिजेक्शन है कुछ पार्ट तो रिजेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो पार्ट रिजेक्ट हो रहा है अगर वो लीस्ट है, तो इसका मतलब जो पार्ट रिजेक्ट हो रहा है वो लीस्ट है, इसका मतलब ये है कि जो आपका वर्क आउटपुट है दैट शुड बी मैक्सिमम, दैट शुड बी. That is 0.393. 0.393 kilowatt. Okay, 0.393 kilowatt. It is C option, that is right. 0.4. 393, that is 0.4 kilowatt. This is the solution. Okay, I hope you got the answer and you got the feeling how you have to solve this question. Okay, next problem. Let us solve the next. Let us go for the next.
Once again, you have 2 minutes to read and solve this question. Try this question, then I will give you the solution. An engine works on the basis of Carnot cycle, operating between temperature limits 800 and 400 Kelvin. If the heat supplied is 100 kilowatt, the output is simple question. Solve कर सकते हैं. Carnot cycle, that means reversible cycle. Carnot cycle means reversible cycle. एक इंजन है जो इन दोनों साइकिल्स के बीच में वर्क करता है. टेम्परेचर आपको गिवन है 400 केल्विन एंड 800. यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 800. हीट इंजन है 400. 400. 800 केल्विन है 400. सिंपल है. एफिशिएंसी आपको गिवन है दैट इज Q1 Q2 work output, that is W by Q1, and that should be equals to 1 minus Carnot efficiency, that is reversible cycle. Carnot given देने का मतलब ये that is reversible. ये तो simple question था. Q1 1 minus T2 by what is T? Q1 is given as 100. 1 minus T2 800. 400. 400 by 800, that is 1 by 2, that is that's 50 kilo. That's 50 kilo. Simple answer. That's 50 kilo. Okay.
Okay. दो रिवर्सिबल इंजन है आर कनेक्टेड इन सीरीज. दो इंजन है, अगर हमने कह लिया सपोज E1 एंड अगेन अदर इंजन इज E2. दो इंजन है कनेक्टेड इन सीरीज E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. टू इंजन E1 and E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो जो पहले वाले की एफिशिएंसी है दैट इज 60%, राइट. तो सपोज कि हमने अगर इसको 100 किलो जूल एनर्जी दे दिया, हीट सप्लाई कर दिया 100 किलो जूल, तो जो एफिशिएंसी है 60, दैट मीन्स 60 किलो जूल आपको वर्क मिल जाएगा, 40 किलो जूल आप रिजेक्ट कर देंगे. दूसरे की एफिशिएंसी है 50%, तो ये आपका 20 किलो जूल वर्क देगा और 20 किलो जूल हीट. अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों इंजन को रिजेक्ट करके, दोनों इंजन को हटा के एक इंजन लगा देना. अगर आपने एक सिंगल इंजन लगा दिया, इन दोनों को हटा के एक सिंगल इंजन लगा दिया, दैट इज एक सिंगल इंजन लगा दिया आपने ई, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी. सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं इस सिंपल इंजन की जो एफिशिएंसी है, एक सिंगल इंजन है जिसमें 100 किलो जूल एनर्जी आप दे रहे हैं, 20 किलो जूल आप एनर्जी रिजेक्ट कर रहे हैं. दिस इज T1, दिस इज T2. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ई इज 1 minus Q. What is Q2? 1 minus Q2 is 20, heat rejection. Q1 is 100. Q1 is, that is 0.2 and that is 80 heat injection. That you can simply verify from. You can simply verify that from engine heat engine की efficiency, that is 80%, right? 80%. सिंपली आपसे कहा गया दो इंजन थी, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 100 किलो जूल हीट हमने सप्लाई किया, उसका 60% आपने 60% उसकी एफिशिएंसी, दैट मीन्स कि उस हीट सप्लाइड का 60% वर्क में कन्वर्ट हो जाता है. रिमेनिंग आपको रिजेक्ट कर दिया. E2 को सीरीज में दोनों ई वाली. अब इन दोनों को हटा के एक इंजन हमने ई लगा लिया, सिंपल. उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 100 minus 20, दैट इज 20 by 100, 1 minus, दैट इज 80%, दैट इज 8. नेक्स्ट वन, reversible heat engine rejects 80% of the heat supplied during a cycle of operation. If the engine is reversed and operates as a refrigerator, then its coefficient of performance shall be. एक हीट इंजन है जिसको रिवर्स करके आपने उसको हीट इंजन को, सॉरी, उसको रिवर्स करके आपने रेफ्रिजरेटर के तौर पर यूज किया है इंजन को, तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, क्या आपसे. यू कैन जस्ट ट्राई दिस इन 2 minutes you have. इसकी एफिशिएंसी, हीट इंजन है, ट्राई दिस. एक हीट इंजन है
temperature is T1, temperature is T2, heat received Q1, heat rejected Q2 and work produced. 80% एफिशिएंसी है, दैट मीन्स जो आपने Q, अगर हमने इसको सिर्फ Q लिख दिया सपोज, अगर Q अमाउंट हीट आपने रिजेक्ट सप्लाई किया, 80% एफिशिएंसी है, दैट मीन्स दैट विल बी 0.82 एंड Q2 विल बी पॉइंट, इतना अमाउंट आपने उसमें से रिजेक्ट किया है. तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, राइट? 1 माइनस एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 by 1 minus Q2 by Q1, 1 minus 0.82 by point 2, sorry, Q2 by Q1, Q2 by 0. ये आपकी एफिशिएंसी है हीटिंग, ये एफिशिएंसी है हीट इंजन की. हमें करना क्या है, वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन एंड ऑपरेट एज रेफ्रिजरेटर. अगर इसको रेफ्रिजरेटर तौर पे ऑपरेट करना है, उस केस में क्या है, क्यूपी ऑफ रेफ्रिजरेटर. अगर इसे ही आपने रिवर्स कर दिया, अभी ये रेफ्रिजरेटर ऐसे एक्ट कर रहा है, दिस T1, दिस T2, दिस इज Q2, दिस Q1, और इसमें अभी आपको वर्क देना पड़ेगा. व्हाट इज COP? Q2 by W, Q2 by W. Alright, what is Q2? Q2 is 0.22. What is W? 0.8. ये था आपका 0.8. यहाँ से Q2 by Q1 आपने यहाँ से फाइंड कर लिया. व्हाट इज Q2 by Q1? आपका W मिल जाएगा वहां से, दैट इज rejects 80%. Sorry. This rejects 80%. No? This rejects 80%. Okay. This rejects 80%. This 0.8 work is point. This rejects the 80%. This rejects 80%. Rejects 80% means Q2 is 0.8. That is 0.82. Q1 is 0.2. That is 4. The COP of refrigerator is, I थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे लगा शायद ये एफिशिएंसी की वैल्यू, बट दिस इज हीट रिजेक्शन, दैट इट रिजेक्ट्स हीट ऑफ 80% heat, that means efficiency is 20%. That means efficiency is 20. 1 minus 0.82 by 2. That is efficiency is 20%. Efficiency is 20% every point. Efficiency is 20%. Heat engine efficiency, that is 0.2. Right? This is rejecting 80%. That means efficiency is 20%. Okay, 20% earlier. Now that heat engine is reversed, right, and working as refrigerator. Here it is working as refrigerator. उस केस में उस रेफ्रिजरेटर की COP कितनी होगी, that you have calculated, and that will come as 4. Option is, this was given as Q2, heat rejection. Next one.
A reversible heat engine operating on a Carnot cycle between temperature limits 300 Kelvin and 1000 Kelvin produces 14 kilowatt of power. Okay, calorific value of the fuel is 40,000 kilojoule per kg. 40,000 kilojoules per kg. Then the fuel consumption will the fuel consumption. Okay, you have 2 minutes to solve this question. Fuel consumption has been asked. आंसर यू हैव टू फाइंड इन केजी पर आवर. जो यूनिट है वो है केजी पर आवर. यूनिट फॉर द आंसर इज फ्यूल कंजम्पशन. आपको फाइंड करना है राइट इन केजी पर. यू हैव टू फाइंड दैट इन केजी पर. सिंपल क्वेश्चन है. You just quickly try it and tell me the. Let us try. आपसे कहा गया है कि रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है जो 300 और 1000 पे वर्क कर रहा है. दिस इज 1000 केल्विन T1 and this is a engine, right? Heat engine operating. This is a heat engine. T2 is 300. T2 is 300. Collect Q1 and Q2 heat supplied and heat rejected, and that is work. And this is given as 14 kilo. This is given as 14 kilo. Now this is reversible engine. This is reversible engine given hai. That is, this engine is reversible engine. For reversible engine, efficiency of engine is W by Q1, and that is equals to 1 minus T2 by. राइट. टेम्परेचर टर्म में भी जो आप हीट के टर्म में लिखते हैं, हीट और वर्क के टर्म लिखते हैं, दैट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल बोथ. लेकिन जो टेम्परेचर टर्म में लिखा है दैट इज फॉर रिवर्सिबल ओनली. यहाँ पर रिवर्सिबल लिखा हुआ था इसलिए हमने T1 माइनस T2 by T1 दी. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड W by Q1, that is 14 by Q1, and 1 minus T2 is 300 by 1000, and that is 700 by 1000. 700 by 1000. And what is Q1? And that Q1 is 20. Right? 7 by 10, 140 by 7, that is 20 kilowatt. Now Q1 is 20 kilowatt. This much amount of heat is needed. This is heat supplied. Q1 is heat. तो अगर इतनी हमारी हीट सप्लाइड है तो फ्यूल कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया. व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन. जो फ्यूल है वो 40,000 किलो जूल पर केजी. 1 kg बर्न करने पे 40,000 किलो जूल प्रोड्यूस करता है. राइट. जो हीट है दैट इज मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू. राइट. तो मास ऑफ द फ्यूल अगर आपको चाहिए दैट इज Q बाई कैलोरीफिक वैल्यू. Q इज 20 किलोवाट किलो जूल पर सेकेंड. इसको हम पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे. राइट.
किलोजूल पर आवर, सॉरी, यस, किलोजूल पर आवर, और किलोजूल पर केजी से हम डिवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम एज किलोजूल पर 40, 20, 100, that is 1.8. Mass of the fuel required is 1 kg per hour. ये जो किलो जूल था, दिस इज किलो जूल पर सेकेंड, किलो वाट इज किलो जूल पर सेकेंड, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलो जूल पर आवर, तो 3600 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इन किलो जूल पर आवर, दिस इज इन किलो जूल पर केजी, एंड दैट विल बिकम केजी, ये हमें चाहिए था, जो यूनिट है केजी पर आवर, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 1.8 किलो जूल, सॉरी, केजी पर कितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट आपको। ओके, कितने फ्यूल की जरूरत आपको। आई होप यू गॉट द आंसर। हीट कितनी जरूरत है, दैट इज 20 किलो वाट, दैट इज 20 इंटू 3600 किलो जूल पर आवर, उसके लिए फ्यूल कितनी जरूरत पड़ेगी, 40,000 से आपको डिवाइड कर दिया, दैट इज केजी पर मास ऑफ द एक्शन। A reversed Carnot engine removes 50 kilowatt from the heat sink, removes 50 kilowatt from the heat sinks. The temperature of the sink is 250 Kelvin. The temperature of the reservoir, heat reservoir, is 300 Kelvin. Power required by the engine. ये तो सिंपल, दिस इज सिंपल, T1, T2, 300, 250 Kelvin, right? यहाँ से जो हीट है Q2 is 50 किलो, reverse Carnot cycle is power required work input, that is COP equals to Q2, Q2 by W, and equals to T2 by 1 by Q1. This is 50, T2 is, what is Q2? Q2 is 50, and that is equals to 250 divided by W is 10. W is 10. That's that was a simple problem. Power required. Once again, you have 2 minutes to solve this question.
two reversible engine works between temperature limits of 260 and 60 degrees Celsius. To improve the performance, we have to raise the source temperature, lower the sink temperature, insulate engine and none of the ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं. लेकर सी रिवर्सिबल इंजन है, एक रिवर्सिबल इंजन है. लेकर सी अभी T1 है, that is 60 डिग्री से 260 डिग्री. yes, 260 plus 273 533. T1 is 530. T1 is 5. T1 is 533. So what is T2? T2 is 30 degrees Celsius, that is 303. This is a heat engine. Q1, Q2, heat supplied, heat rejected, and 1. So what is the efficiency of engine? This engine has the efficiency of 1 minus T2 by T1, reversible hand. 1 minus, what is T2? 303 by 533, 530. Okay, 303 minus 530, 25. 0.4315 minus 2. Okay, no, this is 30, sorry, 60 degree. This is 60 degree. This is 33. This is 333. That is 37.0.375. राइट, ये है आपका इनिशियल एफिशिएंसी. राइट, अब हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें कह दिया गया है कि जो आपका T1 है, दिस T1 सोर्स टेम्परेचर T1 is 300 and T1 is 300 degree Celsius. That means 573 Kelvin. This has become 573 Kelvin. इस ए का जो ऑप्शन में आएगा that is T2 by T1 and that is 1 minus. What is T2? T2 is same 333 divided by 573. Right? That is 0.4188. Now B, what is B? In this B, even is lowered to 30 degrees Celsius. That means 303. Now what is the efficiency in the case B? 1 minus T2 by T1. 1 minus, what is T2? 303. 1 minus 303 divided by 570. Now 573 minus 303 is 0.47. जो आपकी एफिशिएंसी है बी की, दैट इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड दैट इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ जो आपका इनिशियल. तो ऑप्शन बी, सिंक टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो आपकी एफिशिएंसी, सिंक टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. एफिशिएंसी दोनों कैसे बढ़ रही है, बट बी जो आपका है दैट इज इन दैट केस सिंक टेम्परेचर को लोअर करने पर जो एफिशिएंसी बढ़ रही है दैट इज 4. तो हम जो इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए जो ऑप्शन यूज करेंगे दैट मीन बी, lower the sink temperature. We will lower the sink temperature. Right, we will lower the sink temperature. Right, we will lower the sink temperature. We will lower the sink.
Next one. An inventor claims to have developed a refrigeration unit which maintains minus 10 degrees Celsius in the refrigerator, which is kept in a room where the surrounding temperature is 25 degrees Celsius and which has a COP of 8.5. His claim is, claim आपका valid है या नहीं valid है, that you have to. This you have to. ओके, इस इन्वेंटर ने जो अब टेम्परेचर लिमिट है -10 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर है -10 to 25 डिग्री सेल्सियस, सीओपी 8.5 है। उस इन्वेंटर का ये कहना है कि जो आपकी एफिशिएंसी है, सॉरी जो सीओपी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज 8.5। नाउ इज हिज क्लेम वैलिड और नॉट? दैट हैज बीन, क्या उनका क्लेम वैलिड है? दैट यू हैव टू you have to find the answer whether this claim is valid or whether this claim is valid or we have to solve this question. एक रेफ्रिजरेटर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 Kelvin. That is 298 Kelvin. This is a refrigerator. Here the temperature is T2 is -10 degrees Celsius, that is 263 Kelvin. Q2, this is 1 input. Then what is the COP? Carnot COP. Let us find Carnot. Carnot COP, that is for maximum COP. Maximum COP. What is COP? And that is T2 by T1. Maximum means refrigerator cycle, sorry, जो reversible cycle के लिए T1 minus, that is T2 263 divided by 298 minus 260. That is 7.5. 7.5. And that means for a given temperature limits, that means for given temperature limits, for given temperature limits, the maximum COP can be, maximum COP can be 7.5. 7.5. 7.5. Okay, maximum CP can be 7.5. Maximum can be 7.5. Right. Given COP, the claimed COP is
जो क्लेम्ड सीओपी है, क्लेम सीओपी इज 8.5 and that is invalid. That means invalid. This engine is not possible. कोई भी ऐसा इंजन फिक्स टेम्परेचर लिमिट के बीच इस T1 और T2 के बीच में चाहे जो इंजन लगाते हैं आप, उस इंजन की जो एफिशिएंसी होगी या फिर सीओपी होगी, सॉरी, अगर आपने रेफ्रिजरेटर लगाया है, फिक्स टेम्परेचर लिमिट जो कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट थ्योरम ये है कि फिक्स टेम्परेचर लिमिट के बीच में, फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो एक रिवर्सिबल इंजन की, राइट। और अगर उस फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में बहुत सारे रिवर्सिबल इंजन आपने लगा दिए तो उन सारे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी एक ही होगी, सेम, राइट। तो जितने भी इंजन आप लगाएंगे सबकी एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे सेम आएगी। इसका मतलब ये जो क्लेम किया गया है, ये जो क्लेम किया गया है कि हमारा जो इंजन है उसकी सीओपी 8.5 है इन टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, दैट इज इनवैलिड, राइट, दैट इज इनवैलिड। सिंपली आंसर इज इनवैलिड। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम। The COP of a refrigerator working on a reversed Carnot cycle is 5. The ratio of highest absolute temperature to the lowest absolute temperature. Simple question है, इसमें कुछ नहीं करना है। COP is T2 by T1 minus, refrigerator है और COP is given as 5, 1 by T1 by T2 minus 1, यानी T1 by T2 minus 1 equals to 1 by 5, यानी T1 by T2 equals to plus what, that is 6 by 5, that is very simple question. 1 point, the answer is 1 point. अब highest जो temperature है T1, T1 is higher temperature, हमारे जितने भी लोकेशन है हर बार T1 is higher temperature, T2 is lower, higher and lower. Simple answer is question. I hope you got that. 1 point is our next. Vapor compressor refrigerator has COP 4, इसी साइकिल की रेफ्रिजरेटर है वो इसी साइकिल पर वर्क कर रहा है, उसकी COP 4 है and extracts 10 kilojoule of heat from a cold reservoir. If this machine is worked as heat pump, how much heat will it deliver to the environment?
जब ये रेफ्रिजरेटर थे, इसकी जो सीओपी है वो है 4। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 4 और वो 10 किलो जूल हीट एक्सट्रैक्ट करती है। अब उसी मशीन को आपको हीट पंप की तरह यूज करना है, तो हाउ मच हीट विल इट डिलीवर टू द एनवायरमेंट, दैट इज दिस ईयर। जब ये रेफ्रिजरेटर था, दिस इज Q2, दिस Q1, T1, T1 T2 गिवन नहीं, यहाँ पे वर्क है। COP given as COP of refrigerator. COP of refrigerator is given as COP of refrigerator is given as COP of refrigerator is given as this 4. COP of refrigerator given as this is 4, and that is equals to Q2 by and what is W? Q2 is 10 by 4, that is 2.5. A Q2 given here, that is 10 kilo. And extracts heat of 10 kilo. Extracts extracts 10 kilo. This is 2.5. This is 2.5 W. Now this is W. The work आपको मिल गया यहाँ पे, that is 2.5. Now what is COP of heat pump? What is COP of heat pump is COP of refrigerator plus 1. COP of refrigerator plus COP of refrigerator plus, that is, and what is COP of heat pump? That is Q1 by डिजायर्ड इफेक्ट चेंज जाएगा Q1 by W। हीट पंप के लिए ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, रेफ्रिजरेटर के लिए ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट Q2, रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड इफेक्ट Q2, हीट पंप के लिए डिजायर्ड इफेक्ट है, दैट इज here you will get Q1 by, what is Q1 by Q1 here metric, that is equals to 5. Q1 is, what is W, that is 2.5 into 2.5, that is 12.5, that is 12.5। उसी को अपने हीट रेफ्रिजरेटर था, उसी रेफ्रिजरेटर को अपने हीट पंप की तरह यूज कर लिया। तो जो सीओपी का रिलेशन होता है हमने पढ़ा था, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। कैन सिंपली यूज दैट एंड फाइंड द सीओपी ऑफ हीट पंप। हमें ये फाइंड करना है कि जो एनवायरनमेंट है, दिस इज एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट, इसको कितना हीट रिजेक्ट हुआ। दिस इज आवर आंसर 12.5 इज आवर। नेक्स्ट वन, सिंपल क्वेश्चन, हीट पंप का सीओपी फाइंड करना है। 1 minute to solve this question. Condenser, this is condenser. Condenser is high temperature, is evaporator.
and this temperature is given as -3 degrees Celsius. Right? This is -3 degrees Celsius. This is given as 37. 37 means plus 273, that is 80, 30, 310, minus 3, that is 270. अगर इसी को आपको हीट पंप के तौर पे यूज करना है, दिस इज अगर इसको हीट पंप के तौर पे यूज करना है तो व्हाट विल बी सीओपी? आइडियल रेफ्रिजरेटर है, दैट मीन्स रिवर्सिबल है, तो आप टेम्परेचर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज T1 बाई T1 माइनस व्हाट इज T1 हायर टेम्परेचर 310 बाई 310 माइनस T2 27, ऐसे फाइंड कर सकते हैं 310 डिवाइड बाय 7.7, 7. या फिर जो रेफ्रिजरेटर गिवन था उस रेफ्रिजरेटर की सीओपी फाइंड कर लेते हैं और हीट पंप की रेफ्रिजरेटर सॉरी हीट पंप के लिए ये है हमारा डिजायर्ड, नहीं दिस इज आवर डिजायर्ड सिंपली 7.7. अगर आप रेफ्रिजरेटर फाइंड करते +1 करना पड़ता, रेफ्रिजरेटर की जो सीओपी यहाँ पे आएगी दैट विल बी 6.75 एंड उसमें 1 ऐड करते हैं 7.75, दैट इज सीओपी ऑफ दिस इज आवर. Yes, I hope you got this. Point. Next one. Which one of the following devices complies with the class's statement of second law of thermodynamics? Closed cycle gas turbine, internal combustion engine, steam power plant, all these are heat engine, right? They are kind of heat engine. Steam power plant, gas turbine, these are the kind of heat engine. And this is refrigerator, that is based on class's statement of second law of thermodynamics. क्या होता है? Cannot transfer heat from lower temperature to higher temperature without any external heat. उसके लिए आपको एक रेफ्रिजरेटर यूज करना पड़ेगा. ओके, जो स्टोरेज जो ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर पे है, जो आपका स्टोरेज है, ये जो स्टोरेज है ये ऑलरेडी आपका लोअर टेम्परेचर पे है और इस लोअर टेम्परेचर से ही आपको हीट लेनी है और हायर टेम्परेचर आपका सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग को रिजेक्ट करना है और ये आपका होगा रेफ्रिजरेटर से और उसकी आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो हम कंप्रेसर में देते हैं, जो कंप्रेसर हम रन करते हैं रेफ्रिजरेटर का, वी डू दैट. इसका मतलब दैट इज बेस्ड ऑन क्लॉसियस स्टेटमेंट. नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी फास्ट. व्हाई कार्नोट साइकिल इज इम्प्रैक्टिकल? बहुत सारे रीजन है. कार्नोट साइकिल के इम्प्रैक्टिकल होने के बहुत सारे रीजन, राइट. लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे पावर प्लांट, तो वहां पे देख लेंगे कि कार्नोट साइकिल इम्प्रैक्टिकल होने के बहुत सारे रीजन कौन कौन से. बट हियर वी विल सी 4 प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में. आपके पास 4 प्रोसेस. अगर आप कार्नोट साइकिल लिखते हैं, अगर सपोज हमने पीएच डायग्राम ले लिया, पीवी डायग्राम, जस्ट टेक पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. 1 to 2 that is isothermal expansion, 2 to 3 is reversible adiabatic expansion. Now 3 to 4 is reversible adiabatic isothermal compression, and 4 to 1 is
is isothermal expansion. This is reversible adiabatic expansion. This is isothermal, and this is adiabatic reversible adiabatic. Right. Reversible adiabatic means this process will be 2 to 3 will be isentropic process, entropy will be constant. Right. इसमें जो isothermal process है, isothermal very slow, adiabatic थोड़ा वेरी स्लो क्यों है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि हर जगह टेम्परेचर उसका सेम हो जाए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तरह से बहुत स्लो प्रोसेस करेंगे। आइसोथर्मल का मतलब ये है कि उसमें हर पॉइंट पे पूरे सिस्टम में हर जगह पे टेम्परेचर उसका टी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम उस प्रोसेस को इतना टाइम देंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए और पूरा का पूरा उसका जो भी सिस्टम है उसमें जो टेम्परेचर है दैट शुड बी कांस्टेंट। राइट, तो दैट सिस्टम दैट प्रोसेस विल बी वेरी स्लो, एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी वेरी फास्ट, दैट इज वेरी फास्ट। राइट, अगर वेरी फास्ट है तो एक प्रोसेस आपका फास्ट स्लो है, दूसरा प्रोसेस फास्ट है, फिर स्लो है, फिर फास्ट है। ये जो स्लो फास्ट आपका अल्टरनेट चल रहा है, इसको प्रैक्टिकल बनाना मुश्किल है। एक रीजन ये है और बहुत सारे रीजन है, जब हम पावर प्लांट पढ़ेंगे वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज वेरी फास्ट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, the engines A, B and C operating on a Carnot cycle use working substance as argon, oxygen and air respectively. Okay? Which engine will have higher efficiency? तो किस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी ये आपको बताना। Just think about this and tell the. For that you have to remember Carnot's. Have to remember the Carnot's. So what is Carnot's? No, what is Carnot's? So what is Carnot's? Carnot's theorem is कि अगर फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स बिटवीन फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स, दिस इज T1, दिस इज T2, इसके ऊपर आपने बहुत सारे इंजन लगा दिए, सपोज E1, E2, E3, इस फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में बहुत सारे इंजन आपने लगा दिए। राइट, तो जो रिवर्सिबल इंजन है दैट विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में बहुत सारे इंजन अगर लगे हैं तो जो इंजन रिवर्सिबल होगा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। अब सपोज ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, जो थर्ड वाला है ये है इरिवर्सिबल। ओके, अगर बहुत सारे रिवर्सिबल इंजन लगे हैं तो उनकी एफिशिएंसी आपस में सेम होगी, लेकिन जो इरिवर्सिबल है उससे ज्यादा। दिस इज कार्नोट्स। एक तो ये हो गया रिवर्सिबल इंजन के लिए। दूसरा जो एफिशिएंसी है, कार्नोट एफिशिएंसी जो है independent of working fluid, is independent of working fluid, वर्किंग फ्लूइड कह लीजिए, वर्किंग सब्सटेंस कह लीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट से डिपेंड करती है। दैट इज एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन रिवर्सिबल एफिशिएंसी। कार्नोट थ्योरम रिवर्सिबल के लिए ना, रिवर्सिबल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट ये कार्नोट थ्योरम है। राइट, तो अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है, सेम हायर एंड लोअर टेम्परेचर T1 एंड T2, तो जितने भी इंजन इसके बीच में होंगे सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। अगर सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल, दैट मींस ऑल द इंजन्स A, B एंड C, ऑल द इंजन्स आर रिवर्सिबल। इन सारे इंजन्स की जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी सेम। राइट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। उसमें आपने आर्गन यूज किया है, ऑक्सीजन यूज किया है या फिर एयर यूज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द इंजन्स विल हैव सेम एफिशिएंसी, ऑल द इंजन्स विल हैव सेम एफिशिएंसी, like all the engines will have same efficiency, that is Carnot's theorem. Okay, फिक्स टेम्परेचर लिमिट्स की बात की जा रही है और रिवर्सिबल। कार्नोट थ्योरम ये है कि अगर फिक्स टेम्परेचर लिमिट ले लिया आपने T1 T2, उसके बीच में जितने भी इंजन्स लगे होंगे उनमें जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम। राइट, और उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और अगर बहुत सारे
रिवर्सिबल इंजन लगे हुए हैं तो सबकी एफिशिएंसी सेम होगी, लाइक फ्रॉम हियर गिवन इट वाज that is for reversible engine the efficiency depends on a reversible cycle, sorry, for reversible cycle efficiency depends on engine. Okay. So that's our answer. Okay, now uh, यहाँ पे हम अभी रिवीजन कर रहे हैं कोर्स का, लेकिन अगर आप लाइव देखना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर, लाइव थर्मोडायनेमिक्स on Unacademy learning app, right? That you can watch at Unacademy learning app, right? और ये लिंक आपको कैसे मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहाँ पे मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम द 7th of January 2021, दैट इज 7th या फिर 8th January, 7th और 8th January onwards, that we will start. You can join the Telegram channel of this engineering live, Telegram channel of engineering live, जो आपका अनअकैडमी का चैनल है टेलीग्राम, या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, राइट? अनअकैडमी ऐप, right? You will get all the notification of the classes that I will start on the Unacademy. You can follow me on the Unacademy, या फिर जो इंजीनियरिंग लाइव चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा, राइट? यू कैन फाइंड द लिंक देयर आल्सो. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर देयर. आप लाइव देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हैं, ये जो आपका इंजीनियरिंग लाइव चैनल है इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, यू विल फाइंड माय नेम रवि प्रकाश, और आपको प्लेलिस्ट वहां सर्च करेंगे, यू कैन वॉच द लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल हियर एट द इंजीनियरिंग लाइव चैनल, इस इंजीनियरिंग लाइव चैनल. ये जो चैनल का टेलीग्राम चैनल है इंजीनियरिंग लाइव का, वो आपका डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन दिस. वहाँ पे मैं आपको, अगर ये चैनल आपने ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग लाइव का जो टेलीग्राम चैनल उसको आपने ज्वाइन कर लिया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा. आप यू कैन वॉच द लाइव लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. दैट विल बी फुल कोर्स complete. So thank you very much, thanks for the joining in. Subscribe to Unacademy and this channel also, engineering live. Use this code Ravi PY, referral code, and get 10%. All right. So thank you very much. Thanks for the joining. Thank you.